Hello and welcome students to another interesting video of English, and in this video we are going to cover how to craft good arguments. If you remember that we have done debates, and in debates we come across a statement that debates is an organized argument. So we are just focusing on this, that if I am talking about arguments, then arguments are a reasoned attempt to convince the audience or the opposing team to accept a particular point of view. अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि दो टीम्स हैं और एक टीम्स अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रही है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो दूसरी टीम या जजेस किस तरीके से कन्विंस होंगे या उस मैटर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस. सो लेट मी टेल यू हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट अ गुड आर्ग्यूमेंट. कि अगर हम गुड आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो दे मस्ट बी एविडेंस्ड स्टेटमेंट्स. ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके पीछे कुछ तथ्य हों, ऐसे स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन रिसर्च. सो एंड दे आर क्वाइट सिमिलर टू ओपेड आर्ग्यूमेंट्स. जैसे हमने ओपिनियन बेस्ड टेक्स्ट में देखा था वैसे ही हैं. दे मस्ट बी बिलीवेबल, having all relevant information and logically sound. तो किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हों? ऐसे जिसपे दूसरे लोग बिलीव कर सकें एंड जिसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और जो लॉजिकली साउंड हों. देन वी स्टार्ट विद द सिंपल कंसेप्ट. हम बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी कीप ऑन बिल्डिंग इनटू the complex statements. So there must be a base, there must be a foundation on which to construct a building. Then in debate, structure and verbal presentations are very crucial. How you are presenting your statements in front of the team, how you are presenting your arguments in presence of the judges as well as the opposite team. So if I say that there is a helper with us, so now that is the format. So basically we are having three steps. The first one is assertion, next is reasoning, and the last one is impact. Now let us see them in detail one by one. If I am talking about assertion, assertion क्या होता है? जहां हम अपनी पोजीशन को डिक्लेयर करते हैं regarding a motion. मोशन मीन्स द टॉपिक, कि मेरी टीम इस मोशन के फेवर में है या अगेंस्ट में है. एट दैट टाइम आई कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ फैक्ट और अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सो दैट माई assertion becomes strong. Now moving on to the second step which is reasoning. मैं ये चाहती हूँ कि दूसरी टीम भी बिलीव करे कि जो भी तथ्य मैं दे रही हूँ या जो भी स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स में प्रेजेंट कर रही हूँ वो उसको एक्सेप्ट करे. तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आई एम प्रेजेंटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिक्स, साइटेशंस, कोट्स एंड एनालॉजीज. अगर मैं ये सब प्रेजेंट करती हूँ, एट दैट टाइम द अदर टीम will consider it and my arguments or statements will be having certain evidence which are foolproof and they becoming logically convincing. Now moving on to the third step which is the most important also, the impact. I have given my assertion. I have also produced certain statements in regard to the evidence. Then Do you think that is going to impact the judges? क्या दूसरी टीम कन्विंस हो रही है? क्या उस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं? So how it relates to your assertion? जो भी एविडेंस में प्रोवाइड कर रही हूँ या प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके बारे में क्या इम्पैक्ट पड़ा? Now if I ask you, just consider this as an example. The house believes that physical education should be compulsory in all schools. अगर फिजिकल एजुकेशन को सभी स्कूल्स में कंपल्सरी किया जाए
तो इसी को अब उसी फॉर्मेट में देखते हैं जो हमने सीखा। द फर्स्ट स्टेप इज एजर्शन। तो एजर्शन में मैं अपना स्टैंड क्लियर करूंगी कि मैं मानती हूं या मेरी टीम मानती है। वी बिलीव that physical education should be made compulsory in all schools, and I am also producing a fact or a belief that it promotes a person's general well-being. Now moving on to the second step, which is reasoning. So I am providing the evidence over here that a lot of research has already been conducted in this regard, and which shows a positive correlation between physical activity and a happy or cheerful mood, कि एक कनेक्शन है दोनों में, दोनों ही कोरिलेटेड हैं। नेक्स्ट, आई हैव प्रोवाइडेड दैट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली improves one's overall health and makes a person physically fit. Then the third, that studies have also shown that physical activity can improve attention span, focus and concentration. Here I am providing the multiple benefits that physical education can lead to. Now the last part, the impact. So basically I have stated my assertion, provided reason for it, and now I am saying that if students engage in regular physical activity, they are more likely to be cheerful and physically fit. Here I am trying to build a connection between the two, between the assertion and the reasons that I have provided, and what fruitful results it can lead to. As their focus and concentration improves, it can lead to better academic results. So this is how you can present. Now following the 3 steps, now we have a task for you. So basically you can choose any of the following topic and craft good arguments for both the sides. The first one is the social media. The social media do more harm than good. The second one is about animal rights, that is, should animals be used for scientific testing. Then the third is space exploration. Is space exploration a waste of resources? What do you think about them? And try to frame good arguments for both the sides, the proposition team as well as for the opposition team. I hope that everything is clear to you, the structure as well as the 3 steps. Now keep on working. Thank you and happy learning.